आज हम वापस एक SMP बनाने वाले हैं जो एकदम तगड़ी होगी, मतलब एकदम अच्छी होगी। और SMP में मेरे ख्याल से ये वाली SMP बना रहे थे ना, लेकिन राष्ट्रपति अशरफ गनी बिना लड़े भाग निकले। हाँ चलो स्टार्ट हो चुका है हमारा, मेरा पूरा थोड़ा और पैसे चाहिए तो यहाँ से कमाते। बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। हमले में एक वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू के सांबा सेक्टर में फिर दिखे ड्रोन, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से और ये पैसे मिले, पैसे बाप रे मेरे को मिलने वाले हैं ख्याल से $250। बाप रे ब्लैक XP भी मिली है थोड़ी, ये भी ले लो, ये भी थोड़ा, ये भी वॉल भी बना लो। As hospitals are overwhelmed with the injured, and the Caribbean nation braces for more possible misery for the tropical depression headed its way. बाप रे बाप कितनी अच्छी लग रही है, हमारी SMP थोड़ी अच्छी हो चुकी है। अब चलो दूसरों की SMP में जाके देखते हैं, तब तक कि मेरी SMP में आना जाए। XP के हिसाब से SMP बनाते हैं। चलो SMP कितनी अच्छी हो रही है आज के हमारे। Exports went negative on a monthly basis, pulling back from a stronger showing in June. We'll break down all the drivers. Afghanistan has imploded, but in the face of a Taliban takeover and a chaotic evacuation process, U.S. President Joe Biden offered a defiant defense. He argued that staying on wouldn't have made a difference. भाई तू कैसे बनी? He had been hamstrung by his predecessor Donald Trump. There was no agreement protecting our forces after मेरी May 1. SMP, There was no status मेरी quo SMP of भाई, stability without American casualties after May 1. There was मेरी only SMP। a cold reality. If we're either following through on the agreement to throw our forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan, lurching into the third decade of conflict. Biden's nationally televised address was his first public comment since the fall of Kabul. मेरी SMP पे कब्जा करेगी। Taliban's victory was quicker than anticipated, but he said he will not ask American troops to continue fighting endlessly in another country's civil war. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. I made a commitment to the American people when I ran for president.
I'd bring America's military involvement in Afghanistan to an जा end. निकल यहाँ से While it's been वो ले hard कर and लग messy, गई यस and this far from अब perfect, मैं लग रहा है एकदम प्रो एसएमपी I've का honored that मालिक commitment. और यहाँ पे The बना president's दे speech came गन hours लाइट after desperate scenes unfolded at the Kabul airport. Hundreds of people were seen running alongside a U.S. military मेरे jet को as बहुत it पैसे prepared to मिले depart. At least 7 people were killed, some plunging to their deaths as the planes took off. The Biden called it gut-wrenching. And yesterday, U.S. soldiers fired warning shots as they struggled to manage the chaotic evacuation. Operations were temporarily suspended amid the chaos, but the airport has since reopened. The C-17 touched down early this morning with more U.S. troops to help bring Americans and their allies home. Mr. Biden warned the Afghan forces not to interfere in its efforts to get Americans safely out, saying they'll be met with a devastating response if they try to do so. These satellite images show how people had converged on a और tarmac यहाँ कोई and आए ना तो इसलिए runways. मैंने ऐसा बना रखा Yesterday है marked the और मैं first बन full चुका है day of थर्ड Taliban नंबर 1 rule in Kabul. टच एंड And many parents क्लेम surged onto the ये क्या है tarmac ओके carrying कौन their एसएमपी children. And the airport is the only way out for now. ओए मेरे as the एसएमपी पे घुस Taliban गए encircles मेरे the एसएमपी पे capital. घुस रहे हो Last month, Mr. Biden vowed his decision to pull American forces out of Afghanistan would never end in the infamous evacuation during the final hours of the Vietnam War. Little more than a month later, he has been proven wrong. And the Taliban seized power in Afghanistan 2 weeks before the U.S. completes its troop withdrawal. And the evacuation and withdrawal, unlike what Mr. Biden said, has been anything but secure and orderly. खाली मैंने Afghanistan is unable to mount मेरे को any एक और new एसएमपी resistance बनाने to की Taliban लालच now. में There is no chance. एक और एसएमपी बनानी है भाई One more एक year. काम करते इसे 5 बंद more कर years. देते हैं और ये 20 more years. वापस ए बंद हो गया On the ground would have made any difference. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. The events we're seeing now ओके कौन है are sadly proof कुछ नहीं मिलेगा no amount of कुछ नहीं military मिलेगा force would ever deliver a stable, ओए क्या होता है बार बार मेरे एसएमपी पे सर्वाइवल मल्टीप्लेयर को मेरे पास और मल्टीप्लेयर दोस्त बनाने हैं मेरे इसलिए तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में तो पहले हम देख लेते क्या करके हम पहले देख लेते इसे एक our current military mission. थर्ड पर्सन व्यू short in में time, इसे फर्स्ट पर्सन व्यू में और इसे और इसे get our people and our हेड allies ओवर safely में as quickly as ओ possible. देखो मेरा हेड ओवर कितना अच्छा हो रहा है People being lifted off the roof of a तो मैं मिलूंगा आपको इसी एसएमपी में लेवल 2 के साथ not at all और चलो चैट करते हैं अपने और अपने दोस्त भी तो बनाने हैं तो बाय गाइस और एसएमपी the Afghan military और collapsed एक मिनट sometime without trying to fight. इसमें गुड बाय का होगा And leadership इसमें has to गुड come बाय का together. होगा They clearly have the capacity to sustain the government in place. अरे कहा गया ओके गुड बाय वापिस आऊंगा अगली वीडियो में तो प्लीज मेरी एसएमपी को थोड़ा अगर आपके पास भी रॉब्लॉक्स हो तो मेरे फ्रेंड बनिए नीचे मेरी आईडी का प्रूफ है तो मेरा ये रही मेरी आईडी लिख लेना जल्दी और चलो अब हम चलते हैं बाय गाइस।